जय श्री कृष्ण मित्रों। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, आजना आ विडियोमां आपणे अषाढ़ महीनाना वद पक्षमां आवती कामिका एकादशी विषे वात करवाना छीए। अषाढ़ महीनाना कृष्ण पक्षमां एकादशी कया नामथी ओळखाय छे, एकादशी क्यारे शरू थशे, क्यारे समाप्त थशे, व्रत कया दिवसे राखवामां आवशे, व्रतनुं पारण एटले के आ व्रत क्यारे खोलवामां आवशे, राहुकाळनो समय शुं रहेशे, आ तमाम माहिती तमने आ विडियोमां जाणी शकशो। तेथी આજનો વિડીયો તમે અંત સુધી જરૂર જોતા રહેજો અને જો આ માહિતી તમારા માટે ઉપયોગી લાગે અને વિડીયો પસંદ આવે તો તેને અન્ય લોકો સાથે પણ જરૂરથી શેર કરજો। હજુ સુધી અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય અને તમે પહેલીવાર અમારી ચેનલ ઉપર આવ્યા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન પર જરૂર ક્લિક કરજો। તો ચાલો આજનો વિડીયો શરૂ કરીએ। એકાદશી સનાતન ધર્મનું અત્યંત શ્રેષ્ઠ, ઉત્તમ અને સર્વોચ્ચ વ્રત માનવામાં આવે છે। एकादशीना दिवसे अन्ननु सेवन करवामां आवतुं नथी। शास्त्रोमां जणाववामां आव्युं छे के 5 वर्षनी उंमरथी लईने ज्यां सुधी शक्ति होय त्यां सुधी एकादशीनुं व्रत जरूर करवुं जोईए। अषाढ़ महीनामां आवती एकादशी कामिका एकादशी तरीके ओळखाय छे। वर्ष 2026 में कामिका एकादशी 8 ऑगस्ट शनिवारे बपोरे 2 वाग्याथी शरू थशे अने एकादशी तिथि 9 ऑगस्ट रविवारे सवारे 11:05 पूर्ण थशे। एकादशीનું व्रत उद्यातिथि ने ध्यान में राखीने करवामां आवे छे अने उद्यातिथि अनुसार एकादशी 9 ऑगस्ट रविवारना दिवसे प्राप्त थई रही है। तेथी आज दिवसे कामिका एकादशीનું व्रत राखवामां आवशे। तमाम स्मार्त अने तमाम वैष्णव भक्तो 9 ऑगस्टना रोज कामिका एकादशीનું व्रत राखशे अने तेनुं पारण 10 ऑगस्ट सोमवारना दिवसे करवामां आवशे। पारणनो शुभ समय सवारे 5:48 थी 8 वाग्या सुधी रहेशे। आ समयनी अंदर ज व्रतनुं पारण करी लेवुं, कारण के त्यारबाद द्वादशी तिथि पूर्ण थई जशे अने एकादशीना व्रतनुं पारण द्वादशी तिथि दरमियान ज करवुं जोईए। हवे वात करीए राहुकाळनी। तो 9 ऑगस्टना दिवसे राहुकाळनो समय सांजे 4:30 थी शरू थशे अने 6 वाग्या सुधी रहेशे। राहुकाळनो समय अशुभ मानवामां आवे छे, तेथी आ समय दरमियान कोईपण शुभ के मांगलिक कार्य करवुं नहीं। आ समये पूजापाठ करवानुं पण टाळवुं जोईए। आ रीते राहुकाळना समयनुं खास ध्यान राखवुं जोईए। हवे नियमोनी वात करीए तो एकादशीना नियमो 3 दिवस सुधी पाळवामां आवे छे। दशमीथी लईने द्वादशी सुधी आ नियमोनुं पालन करवुं जोईए। दशमीना दिवसथी ज अन्न अने मीठानुं सेवन छोड़ी देवुं जोईए, एटले के बपोर पछी एटले के सूर्य अस्त पछी अन्न अने मीठुं खावुं नहीं। जमीन उपर शयन करवुं, संपूर्ण ब्रह्मचर्यનું पालन करवुं, रात्रे सूता पहला ज मोढुं शुद्ध करीने सूई जवुं। सवारे एकादशीना दिवसे वहेला उठीने स्नान वगैरे करीने भगवान सूर्यने साक्षी मानी एकादशीना व्रतनो संकल्प लेवो। भगवान विष्णुनी विधिपूर्वक पूजा करवी, तुलसी मातानी पण पूजा करवी। एकादशीना दिवसे तुलसी माताने स्पर्श करवामां आवतो नथी अने तुलसीना पान पण तोड़वामां आवता नथी। आ वखते कामिका एकादशी रविवारे होवाथी तुलसी ने स्पर्श पण करवामां आवशे नहीं। दूरथी ज दीपदान करी शकाय छे। भगवान श्री हरिविष्णुनी पूजा में तुलसीना पाननुं विशेष महत्व है, तेथी पहलेथी ज तुलसीना पान तोड़ी राखवा अने एकादशीना दिवसे भगवान ने अर्पण करवा। त्यारबाद एकादशीना व्रतनी कथा सांभळवी, भगवान विष्णुनी आरती करवी अने आखो दिवस व्रत राखवुं। शक्य होय तो निराहार व्रत राखवुं, परंतु जो एटली शक्ति न होय तो फळाहार करीने पण व्रत राखी शकाय छे। परंतु अन्नનું सेवन बिल्कुल पण करवुं नहीं, कारण के एकादशीना दिवसे तमाम प्रकारना पापो, ब्रह्महत्या जेवा महापापो पण अन्नमा समाई जाय छे अने ज्यारे एकादशीना दिवसे अन्न ग्रहण करवामां आवे छे त्यारे आवा मोटा पापो आपणे पोते ज ग्रहण करी लईए छीए अने तेना भागीदार बनीए छीए। तेथी जो व्रत न पण करी शकीए तो पण एकादशीना नियमोनुं पालन तो अवश्य करवुं जोईए। त्यारबाद व्रतधारीए रात्रे जागरण करवुं जोईए। रात्रे जागरणનું પણ विशेष महत्व है, परंतु जो आखी रात जागी न सको तो पण ओछामां ओछुं अर्धी रात सुधी भगवानનું भजन कीर्तन करता जागरण अवश्य करवुं जोईए। बीजा दिवसे द्वादशीना दिवसे जे शुभ मुहूर्तमां जणाववामां आव्युं होय ते ज मुहूर्तमां व्रतનું पारण करवुं, कारण के कहेवामां आवे छे के जो व्रतનું पारण योग्य समय करवामां न आवे तो तमे 2 दिवस सुधी जे नियमोनुं पालन कर्युं होय अने जे व्रत कर्युं छे ते पूर्ण मानवामां आवतुं नथी। तेथी व्रतना पारणનું खास ध्यान राखवुं। पारण करता पहला कोई ब्राह्मण ने भोजन करावीने संतोष आपवो। जो सवारे ब्राह्मण न मळे
તો એક અથવા એકથી વધુ બ્રાહ્મણના ભોજન માટેની કાચી સામગ્રી, જેને આપણે સીધું કે કરિયાણું કહીએ છીએ, જેમાં લોટ, દાળ, ચોખા, ઘી, શાકભાજી વગેરે તમારી શક્તિ પ્રમાણે અલગ કાઢી રાખો અને તેમાં દક્ષિણા પણ રાખવી જોઈએ. ત્યારબાદ તુલસીદળ, ગંગાજળ, દૂધ અથવા પછી શુદ્ધ અને સાત્વિક ભોજનથી વ્રતનું પારણ કરો. આ રીતે એકાદશીનું વ્રત કરવાથી તમામ પ્રકારની મનોકામનાઓ પૂર્ણ થાય છે. આ લોકમાં મનુષ્ય સુખનો ભોગ ભોગવીને અંતે વિષ્ણુ લોકની પ્રાપ્તિ કરે છે. તો મિત્રો, આ હતી એકાદશીના વ્રત સાથે જોડાયેલી માહિતી. જો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો તેને લાઈક કરો અને અન્ય લોકો સાથે પણ શેર કરો. અને જો તમારો કોઈ પ્રશ્ન હોય તો તમે નીચે કોમેન્ટ બોક્સમાં પૂછી શકો છો. તેનો ઉત્તર અમે જરૂર આપીશું. આ એકાદશીના દિવસે ભગવદ્ ગીતાના પાઠનું અને કામિકા એકાદશીની વ્રતની કથા પણ અવશ્ય સાંભળવી જોઈએ. તો તે માટે અમારી સાથે જોડાયેલા રહેજો, કેમ કે અમે એકાદશીના દિવસે ભગવદ્ ગીતાના પાઠનું પાઠ કરીએ છીએ અને એકાદશી વ્રતની કથા પણ સાંભળીએ છીએ. તેથી અમારી સાથે જોડાયેલા રહેજો. અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો.